Hello all, welcome to Sigma classes. This is the lecture number 2 for the chapter polynomial. So last time we discussed about algebraic expression and then I told you about the condition, what condition makes an algebraic expression as polynomial, and also we discussed about degree. Today we are going to discuss about the zeros of a polynomial. So easy, let's discuss it. I'm going to give you an example. X minus 3. So it's a polynomial. I've written a polynomial here, x minus 3. Now, if I ask you, what should I place here instead of x so that x minus 3 becomes 0? X की जगह मैं क्या रखूं ताकि x minus 3 0 हो जाए? It's so obvious. I should place x should be equals to 3. So that is x minus 3 becomes 0. Because if you put x as 3, this will become what? This will become what? Let me put the value of x as 3. 3 minus 3, which equals to 0. So therefore, the value of the polynomial becomes 0. At x equals to 3, the value of the polynomial becomes 0. So in this case, this 3 will be the 0 of this polynomial x minus 3. 3 is the 0 of the polynomial x minus 3. So what should be 0 then? What should be the definition of 0? The value of the variable at which the value of the polynomial becomes 0 is called the 0 of the polynomial. So let me write down the definition here. The value of the variable at which the value of polynomial becomes 0. The value of polynomial becomes 0. This is what that value is what we call 0 of the polynomial. I hope this is clear to all of you. Okay, it's so easy. And how to find the 0 of any polynomial? How to find out the 0 of a polynomial? Suppose if we have a polynomial px. Suppose a polynomial is there, a polynomial px. px मतलब x एक polynomial है, x उसका वेरिएबल है, तो px मतलब x फंक्शन, p एक फंक्शन है x वेरिएबल में. ओके, so it can be anything like that, x minus 3. Okay, so how to find out the 0 of a polynomial? How to find 0 of a polynomial? Put your polynomial equals to 0. How to find 0 of a polynomial? Put your polynomial equal to 0 and solve for x. ठीक है, polynomial को 0 के equal put कर दो and just solve for the variables. You will eventually get the zeros of a polynomial. Very easy. Now there are some questions related to that which might be asked in the board exam. The question goes like, if x equals to 9 by 4 is the 0 of the polynomial, polynomial as they can give you any polynomial like kx square plus 2k minus 2x plus 7. Find the value of k. Find the value of k. We will use the concept that we have learned कि हमने सीखा है कि 0 वो वैल्यू है पॉलिनोमियल की जिस पर हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए. ठीक है, वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए. So I'm going to put the value of x as 9 by 4 in this polynomial. So what will you do? Put x equals to 9 by 4. So at x equals to 9 by 4, जब हमारा x 9/4 हो जाएगा तो इस polynomial की वैल्यू 0 हो जाएगी. What I'm going to do? I'm going to replace this x with 9 by 4 everywhere, and we will solve. We'll get a equation in terms of k only, and then we will get the value of k. So I'm going to do that here. So k into, instead of x, I have to put 9/4. K minus 2 into x is again 9/4 plus 7 equals 0. Now we just need to solve it. K into 9/4 whole square. So k into 81/16 plus. Now
It's so easy. Let me multiply 2 inside the bracket, 2k into minus 2. So it will be 2k minus 4. Again, I have to multiply it by 9.4 plus 7 equals 0. So now it will be 81 upon 16k. Now 2k into 9 upon 4, it's going to be what? That's how you will multiply the brackets. You have to multiply each and every term inside the bracket. 2k into 9 upon 4, that is going to be 18k upon 4. Or if you just simplify this, you will get 9k upon 2. Then you have to multiply minus 4 with 9 upon 4. Again, you are going to get minus k 9 plus 7 equals 0. Now we just need to solve it. We just need to solve it. 81k upon 16 plus 9k upon 2 minus 9 plus 7, that is nothing but minus 2. Take this minus 2 on the right hand side. It will be what? 81k upon 16 plus 9k upon 2 equals 2. The calculation part is yours. Calculation तो आपको खुद करनी है और मैं समझता हूँ कि you are in 10th standard, you can easily solve a linear equation. It's not that complex. And if you require, you can write in the comment कि you want an explanation on how to solve a linear equation. I'll make a video on that. Now, take the LCM. LCM is going to be 16. That will be 81k. 2 9s 72 equal to, it's going to be 153k, 153k, 153k upon 16 equals to, do the cross multiplication. You're gonna get 153k equals 32, k equals to 32 upon 153. Okay, and that will be the final value. That will be the final value of k, required value of k, I should say. I hope this is clear for all of you. It's not that complex. It's easily understandable. Now, let's move on to the new topic, and that is relationship between zeros and degree. Relationship between zeros and degree of a polynomial. Degree of a polynomial. See, it's so simple. Simple relation है, मैं आपको बता देता हूँ. The relation is degree of any polynomial equals to its maximum number of zeros. Maximum number of zeros. किसी भी पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो सकती हैं वो उसकी डिग्री के इक्वल. व्हाट डज इट मीन? कि मैक्सिमम ऐसी कितनी वैल्यू है हमारे वेरिएबल की जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना दें, वो कितनी हो सकती है? जितनी इस पॉलिनोमियल की डिग्री है. आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल, देन इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. I say we have a quadratic polynomial, and in a quadratic polynomial the degree is 2. For quadratic polynomial, degree is 2. So a quadratic polynomial can have maximum 2 zeros. It can have maximum 2 zeros. ज्यादा से ज्यादा 2 zeros हो सकती है, और कम से कम एक भी नहीं हो सकती, या एक भी हो सकती है. मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा, उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा. Let me give you an example. First of all, I'm going to give you a polynomial and we will try to find out its zero and see how many zeros we can get. X square plus 5x plus 4, we have this polynomial. In order to find out its zeros, we will equate this polynomial with 0. हम polynomial को 0 के equal put करेंगे, and then we have to solve for x. Now use the splitting the middle term method. All of you know how to use the splitting the middle term method to look at the coefficient of x square. That's 1 and the constant is 4. 1 into 4, that will be 4. We have to find two factors of 4 such that whose sum is plus 5. So there are two factors, 4 and 1. Their sum is 5. So I'm going to split the middle term by using these two factors. I'm going to split the middle term, that's 5x, by using 4 and 1. So 4x plus 4. All of you know how to do it. We are doing it from the 8th standard. Now take x common, x plus 4. Now we have the same bracket. We just need to take one common. Now I can take x plus 4 common and then x plus 1 inside the bracket. Now the thing is that either this first bracket x plus 4 can be 0. Agar x plus 4 0 hai, so from here I'll get the value of x as minus 4. And if x plus 1 is 0, then I'll get the value of x as minus 1. I'll get the value of x as minus 1. So these are the two zeros I got. These are the two zeros I got. These are the two zeros I got. Okay. So degree equals to the maximum number of zeros. It proves it कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो सकती है पॉलिनोमियल की? मैक्सिमम हो सकती है 2 जीरोस, और दोनों इस केस में आ गई हैं.
ठीक है. Now let me give you another example. I'm going to write down another polynomial x square minus 2x plus 1 and see how many zeros I get. How many zeros I get. Okay. Split the middle term method. We are going to use minus x plus 1. So x common x minus 1 minus 1 common x minus 1 and x minus 1 we have to equate it with 0. I just forgot it. ठीक है. जीरो के इक्वल पुट करना है जब भी हम वैल्यूज निकाल सकते हैं. सो अगर मैं पहले वाला ब्रैकेट x minus 1 0 लूंगा तो I'm gonna get x equals to 1. Second bracket अगर मैं लूं तब भी I'm going to get the value of x as 1. So in both the cases you can see we have only one value of x at which the value of the polynomial becomes 0. हमारे पास x की सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू है जिस पर हमारे polynomial x square minus 2x plus 1 0 हो सकता है ना. तो in this case मैक्सिमम डिग्री कितनी आ सकती, मैक्सिमम जीरोस कितनी आ सकती थी अकॉर्डिंग टू इट्स डिग्री. दो आई हैं लेकिन दोनों सेम ही हैं. दोनों सेम ही हैं. ठीक है. सो इनफैक्ट वी कॉल इट सॉल्यूशन. There is a difference between roots, zeros, and solution. I'll be telling you about the difference between zeros, roots, and solution in the end of the session. Now, let me, okay, after giving you an example, I'll be telling you the difference between all of them. So, this is the third example I'm going to take. We have a polynomial x square plus 4 and we want to find out its zeros. In order to find out its zeros, we need to equate it with 0. Now, what should be the value of x which should satisfy this equation? x की जगह क्या रखें ताकि x square plus 4 0 के इक्वल हो जाए. If you just solve it, you may think we should place x as 2. Okay, let's try to put 2 here. 2 square plus 4, that will be equals to what? 4 plus 4, that will be 8. It's not getting 0. Let me put x equals to minus 2. Those who are thinking minus 2, let's put minus 2 square will be plus 4 plus 4 plus 4, that is again 8. So what should be the value then? Well, in such cases, no real value exists. कोई real value exist नहीं करेगी. Real value का मतलब होता है real numbers. कोई भी एक ऐसी value x की जो real number हो वह exist नहीं करेगी. There will be some values which we what we call imaginary numbers, and this is what we are going to learn about in the chapter complex numbers in 11th standard. So we are not going to discuss it here, but I'm giving you a glimpse about it. So now here in this case we do not have any value which can satisfy this equation, or we do not have any value of x which makes this x square plus 4 as 0. So therefore in this case we do not have any 0. So I should write down no zeros here. Maximum 2 हो सकती थी लेकिन यहाँ पर एक भी नहीं आई. Okay, only we got 1 0. एक ही वैल्यू ऐसी आई x की जो सेटिस्फाई करती है इक्वेशन को, या फिर पॉलिनोमियल की वैल्यू को इक्वेट कर दे या फिर बना दे इसको 0. यहाँ पर दो वैल्यूज आई हैं. सो हियर वी गॉट 2 zeros. Here we go 2 0. दो zeros आई हैं. ओके. सो डिग्री इक्वल्स टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ zeros. मतलब ज्यादा से ज्यादा दो हो सकती हैं अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो. दो से फालतू नहीं हो सकती. 3 नहीं हो सकती, 4 नहीं हो सकती, 5 नहीं हो सकती. मैक्सिमम 2 जा सकती हैं. होने को एक भी ना हो, और होने को 2 भी हो जाए, या होने को एक भी हो जाए. Now, I hope this is clear to all of you. I'm going to tell you the difference between roots, solutions and zeros. देखो, zeros की बात कर लेते हैं. See, whenever we talk about a polynomial, जब भी हम polynomial के बारे में बात करेंगे तो x की ऐसी वैल्यू जो polynomial की वैल्यू को 0 बना दे उसको हम बोलेंगे zeros. ठीक है. जब यही सेम बात हम इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे, सपोज इफ आई हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है, या फिर इक्वेशन की सेटिस्फाई कर जाने का मतलब यह है कि लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल बना दे, वो रूट्स होंगी. और सॉल्यूशंस क्या होंगे? सॉल्यूशंस और रूट्स. अगर देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं. मैंने यही वाला एग्जांपल दिया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0. सपोज ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी. इक्वेशन क्यों थी? क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू साइन था. दो अलग अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक इक्वल टू साइन के द्वारा लिखे गए थे. सो नाउ यहाँ पर मेरे पास x की दो वैल्यूज आई और दोनों सेम है. तो एक्चुअल में दो रूट्स आए हैं मेरे पास. x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 1 दो रूट्स आए हैं, लेकिन दोनों सेम ही है.
So the values which satisfies our equation, that is what we call solution. Okay, so x equals to 1, इसी इक्वेशन में मैं लिख देता हूं, ध्यान से देखना. हाँ, so x equals to 1 comma 1 are the roots of this equation, but x equals to 1 is the only solution of this equation. I hope this is clear to all of you. ठीक है, x equals to 1 is the only solution. और अगर ये पॉलिनोमियल के रेस्पेक्ट में मैं बात करूं तो x equals to 1 comma 1 are the zeros of this polynomial. Okay, this is the simple difference between all of them. ये छोटा सा डिफरेंस है. Now let's discuss about relationship between zeros and coefficients. The relationship between zeros and coefficients. बहुत simple है. Let's talk about it. So first of all, if we have a linear polynomial, देखो अगर हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री होगी 1, ओके. सो जनरल फॉर्म ऑफ दिस लीनियर पॉलिनोमियल शुड बी व्हाट? जनरल फॉर्म मतलब कैसे हम किसी भी पॉलिनोमियल को एक जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं, हर पॉलिनोमियल को सेम उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना. एक ऐसी फॉर्म जिसको हम किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल को उस फॉर्म में लिख सकते हैं. देखो ax plus b where a cannot be c, ये है जनरल फॉर्म. ठीक है, a जीरो नहीं हो सकता. क्यों? अगर a जीरो हो गया, पुट करो 0 into x plus b, तो हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ b बचेगा. 0 into x will be 0 and b is a constant. b is a constant, so it will be a constant polynomial, not linear. तो linear के लिए हमें ax तो चाहिए ही चाहिए, डिग्री तो 1 चाहिए ना, तो इसीलिए a can never be 0. Then let's try to find out its 0. क्या करें? ax plus b को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, ax minus b और x आ गया minus b upon a. So that's how you will find out the root or I should say 0 of any linear polynomial. कुछ नहीं करना, नेगेटिव लो, कांस्टेंट का डिवाइड कर दो कोएफिशिएंट ऑफ a से, you will get the 0 of a linear polynomial. x equals to minus b upon a. ये फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत है. Now अब मेन पार्ट यहाँ पर शुरू होता है. If we have a quadratic polynomial क्या होता है? इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2. तो जनरलाइज फॉर्म क्या होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की? जनरल फॉर्म is going to be ax square plus bx plus c, where a can never be 0, b and c can. a कभी 0 नहीं हो सकता. a b c can take any real value, कुछ भी रियल वैल्यूज ये ले सकते हैं, कुछ भी रियल नंबर, बट a कभी 0 नहीं हो सकता. a अगर 0 हो गया तो क्या होगा? 0 into x square plus bx plus c. तो 0 into x square, this term will become 0, तो bx plus c बचेगा. यहाँ पर आप देखो डिग्री 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा, तो इसीलिए a कभी 0 नहीं हो सकता. I hope this is clear for all of you. Now अब बहुत आसान है ये. देखो सम ऑफ जीरोस, अगर मैं कहूं कि अल्फा और बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. अल्फा एंड बीटा आर जीरोस. अब अल्फा बीटा क्या है? देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैंने जीरोस के नाम दे दिए. मैं वही एग्जांपल ले लेता हूं भाई, उससे बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी. एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, मैंने देखा था अभी x की दो वैल्यूज आई थी -4 और x इक्वल्स टू -1, जो इसकी जीरोस थी. एक जीरो को मैंने बोल दिया अल्फा, एक जीरो को मैंने नाम दे दिया अल्फा और दूसरे जीरो को मैंने नाम दे दिया बीटा. ठीक है, अब मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. अल्फा बीटा नथिंग बट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस के नाम दे दिए मैंने. तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट यही होते हैं a b और c, इनको ही बोलते हैं हम कोएफिशिएंट. ठीक है, तो द रिलेशनशिप सेज दैट सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा और बीटा का सम शुड बी इक्वल्स टू -b अपॉन a. ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा या अल्फा बीटा क्या होना चाहिए? दैट शुड बी इक्वल्स टू c अपॉन a. दिस इज द रिलेशनशिप. वी विल ट्राई टू वेरीफाइड. हम इसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल है उसके अकॉर्डिंग. देखो यहाँ पर अल्फा और बीटा की दो अलग अलग वैल्यूज आई हैं. मैं डायरेक्टली इन दोनों को ऐड करके एक वैल्यू देखता हूँ क्या आता है इनका सम. तो सम ऑफ जीरोस क्या आएगा? -4 -1, दैट विल बी -5.
और अल्फा बीटा अगर मैं निकालने लगूँ तो क्या आएगा, -4 मल्टीप्लाइड बाय -1 दैट शुड बी इक्वल्स टू +k4, दैट शुड बी इक्वल्स टू +k4। अब मैं अगर रिलेशनशिप से इसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँ तो वेरीफाई करने की कोशिश करूँ तो देखते हैं जरा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a और अल्फा बीटा होता है c/a। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू नॉट हैव द वैल्यू ऑफ a b and c, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। x² + 5x + 4 ये हमारा पॉलिनोमियल है। ax² + bx + c ये हमारी जनरल फॉर्म होती है। a क्या है, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, देखो x² के साथ कुछ भी मल्टीप्लिकेशन में नहीं है यानी 1 है। b की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, और c क्या आ गया, 4 आ गया। तो लेट्स पुट ऑल द वैल्यूज। माइनस ऑफ b, माइनस ऑफ b कितना है, माइनस b है 5 डिवाइडेड बाय a कितना है 1, तो -5 आ गया। c कितना है 4 और 1 कितना, a कितना है 1, तो 4/1 यानी 4 आ गया। तो देखना जरा, डायरेक्ट मेथड से भी -5 आया और वैसे रिलेशनशिप से भी -5 आया, और प्रोडक्ट भी +4 आया था डायरेक्ट से, और रिलेशनशिप से भी 4 ही आया। सो इट वेरीफाइज अवर रिलेशनशिप बिटवीन द zeros and the coefficient of a quadratic polynomial. I hope this is clear for all of you. Now let's move on and try to solve another question. Try to solve another question. The question is, find the zeros of the polynomial. Find the zeros of the polynomial. Let me write down a polynomial x square 2x square plus 4 minus, I would say, 6x. Okay, and verifies the relationship between zeros and coefficient. This is a question similar to the questions given in the NCERT book. You can try some questions in the book, NCERT book, and tomorrow we will be solving some more interesting questions between zeros and coefficients. तो यही हमें करना है। देखो सबसे पहले तो मैं zeros निकालने वाला हूँ for this polynomial. First of all, I will equate my polynomial equals to 0. Then is splitting the middle term method to find out the zeros. 2 and 4 दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे x स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट का। तो 4 8 आ गया, 8 कैसे, दो फैक्टर चेंज का सम -6 हो। देखो 4 और 2 दोनों का सम होता है 6, लेकिन हमें -6 चाहिए, तो -4 और -2 ले लो। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू स्प्लिट द मिडल टर्म बाय यूजिंग दीस टू फैक्टर्स। So let me take 2x common, x minus 2 inside the bracket I'm going to get. Then if you take -2 common, then again x minus 2 inside the bracket you are going to get. Now you can take x minus 2 common, x minus 2 common, so I'm going to get 2x minus 2 inside the bracket. So from here, if I put x minus 2 equals to 0, x equals to 2 will be the solution. 2x minus 2 equals to 0. So from here, 2x will be equals to 2 and x will be equals to 1. So I got the two values. I got the two zeros, that x equals to 2 and x equals to 1. Okay. Now we need to verify the relationship. We need to verify the relationship. I am giving one. I'm giving name this here alpha and this here beta. These are the zeros. So alpha plus beta डायरेक्टली अगर हम फाइंड करें तो कितना आना चाहिए, 2 + 1 दैट शुड बी 3, एंड अल्फा इनटू बीटा अगर हम डायरेक्टली फाइंड करें तो दैट शुड बी इक्वल्स टू 2 * 1 दैट शुड बी 2. नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड इट बाय यूजिंग द रिलेशनशिप. हमें वेरीफाई करना है ना रिलेशनशिप, अभी तो मैंने डायरेक्ट निकाला, वेरीफाई करने के लिए हम जो हमारे पास रिलेशन है उसका यूज करने वाले हैं. बट बिफोर दैट आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ a b and c. कंपेयर करेंगे ax² + bx + c से, तो you will get the value of a as 2. b कितना आएगा, देखो प्लस के b है, यहाँ पर माइनस के 6 है, तो माइनस का साइन भी हैव टू कंसीडर. c कितना आएगा, प्लस के 4 आएगा. So we got the values of a b and c. So now by the relationship we know alpha plus beta should be equals to -b/a. तो माइनस ऑफ b कितना है, माइनस के 6 डिवाइडेड बाय a 2, तो 6/2 that should be equals to 3. And alpha into beta, that should be what, c/a. c कितना है 4, a कितना है 2, so that should be equal to 2. So you can clearly see डायरेक्ट मेथड से भी सेम और रिलेशनशिप से भी सेम, यहाँ पर सम डायरेक्ट मेथड से भी सेम और रिलेशनशिप से भी सेम. So that's it for today. I hope it is clear to all of you. बाकी हम करेंगे कल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमें सॉल्व करने, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में भी मैं कल बताऊंगा. So that's it. I'm going to end now.